Take an example that at a given point of time, your cash book balance and passbook balance happens to be same, and the source book is a cash book. If somebody has given you a check worth 3,000 and you have sent that check to the bank, but bank has not brought the money, which book does it appears in as yet? Cash book. It's on the deposit side or withdrawal side, children? Deposit. So definitely your balance of cash book will go up. So 3,000 worth of check when recorded in cash book will upgrade the balance from rupee 10,000 to rupee 13. Now cash book is showing a balance of 13, whereas passbook is showing a balance of how much? What should be done? I repeat, children, what should be done so that your 13,000 becomes 10,000, children? We should add or subtract? We should subtract. Sir, ye kaam tum pehle bhi karte the. What's new in this? The new thing is this, children. Somewhere in your textbooks, you might find when the source book is cash book, all the items which are acting as deposits or debit in cash book will now be subtracted while preparing BRS. आप मेरे से पूछेंगे, sir, what does this mean? This means the same thing what we have done. So it is only to clarify that technical language. Logic understood or not? Logic understood or not? समझ में आ गया? Please copy this in your workbook, children. Quickly, let's proceed further. Similarly, children, somebody without telling you and without informing you have deposited 2,000 rupees in your bank account. Which book it would be appearing as yet? Passbook. So definitely if it is a deposit, balance will go down or go up? Go up. Suppose the person deposited 12,000 rupees. Sorry, 2,000 rupees. So your balance from 10 would become how much, children? 12,000. ये जो 10 था ये बन गया 12. Cash book balance is what? Passbook is what? My directional arrow shows what direction, children? Left to right or right to left? How I'll make my 10 to become 12, children? We'll add. So many a times you will find this content written in your textbooks. Any item which appears as a deposit or credit item in passbook, in case the source book is cash book, while preparing BRS, it would be shown in the plus item column. तो उस टेक्निकल जार्गन को समझने के लिए I did this. समझ में आ गया? Quickly put it, quickly. Let's proceed further, children. Now, children, you gave a check worth 1,000 to somebody, but that somebody didn't go to the bank to take out the money. Still, this transaction has been recorded where? Cash book. On the withdrawal side or deposit side? होमवर्क किया होगा कैश बुक का, तभी आप जवाब दे पाएंगे. एल्स दिमाग में जोर डालने की जरूरत नहीं है, टैंजेंट भी नहीं बनने वाला. ओके, अगले साल जब 11th रिपीट करेंगे तो पढ़ेंगे. तो चिल्ड्रन ये कैश बुक की विड्रॉल साइड पे होगा. एज अ रिजल्ट बैलेंस मस्ट हैव गॉन डाउन, और आपका जो 10,000 है इट हैज बिकम हाउ मच? 9. नाउ योर कैश बुक इज शोइंग अ बैलेंस ऑफ 9, whereas passbook is showing a balance of 10. Directional arrow shows what, children? Left to right we'll move, right to left we'll move. Left to right. How this 9 would become 10? तो आपको एक टेक्निकल कॉम्पोजिशन नजर आएगा अपनी बुक में. एनी आइटम which appears as a credit item or withdrawal in cash book under the circumstances when the source book is cash book will be added. तो आपको ये सब बकवास पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप बस लिफ्ट करा दे करिएगा, काम खत्म. Quickly, children, quickly. Now, children, bank is giving you certain services and they happen to subtract 1,000 rupees from your account for issue of checkbook, for credit card, for ATM card, and many other services, SMS charges and all. They subtract 1,000 rupees from your account every year, you can say. In the month of March, they have subtracted this money. Will they be calling you and informing you that we have done so? फोन करके हमको बताएंगे नहीं वो.
So this transaction doesn't appear where? Doesn't appear where? Cash book. जिनको इंग्लिश समझ में आती है उन्होंने सही जवाब दिया. It is appearing primarily where only? Passbook. Got it clear? Passbook which side when bank has deducted the money? पैसे चले गए. Deposit or withdrawal? Withdrawal. So passbook balance will go down or go up? Go down. So passbook balance happens to be say 9,000 rupee, children. So your cash book shows 10, whereas passbook is showing the balance of 9. Direction of movement is what? Left to right or right to left? How 10 would become 9, children? By subtracting. I repeat, children, by subtracting. So you'll find a text in your books. Any item which appears on the debit aspect of passbook or as a withdrawal in passbook, while preparing BRS, when the source book is cash book, we'll happen to put it in minus item column. तो इन भयंकर शब्दों से need not to get confused. ये वही लिफ्ट करा दे जो हम पढ़ रहे थे. Got it? Put it quickly, children. तो बात सबको समझ में आ गई. All those which are acting as debits either in cash book or in passbook, which mathematical identity would be allocated to them? कौन सी mathematical identity allocate की जाएगी भाई? Plus or minus? And all those items which are acting as credits in passbook and cash book, which mathematical identity would be allocated? Simple as that, plus. Quickly put in. So everybody understood what all items are to be added and what all items are to be subtracted? चलो. So हमने तो already maximum अपना पहले से बनाया हुआ. We'll continue with that. Children, question number 2 till 6B. शायद मैंने आपको होमवर्क दिया था कंटेंट नोट डाउन करने का. Isn't it? Was given or was not given? Was given ना. चलिए, जिन्होंने कर लिया well and good. जिन्होंने नहीं किया not to worry, अगले साल भी यही पढ़ाया जाएगा. So children, it says bank balance as per cash book. It's a positive item or a negative item? Positive. So you will put it in the plus item column 8960. Remaining other items I'll be marking in front of the transaction only. और आप उसको आफ्टर क्लास अपडेट कर लेंगे अपनी कॉपी में या वर्कबुक में. चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 2630. Which book does it appear in, children? Cash book or passbook? Cash book. Deposit side or withdrawal side? Very good, excellent answer. Because आपने चेक दिया है किसी को, तो हाथ ऐसे कर लीजिए. नहीं तो लड़कियां ससुराल में और लड़के ढाबे में रोटी बनाएंगे जो नहीं पढ़ेंगे, और कुछ जो सर्कस में पैदा हुए हैं वो हंसते ही रहेंगे. चलिए भाई, तो सो कॉल्ड चेक इशू किया गया है. इट अपीयर्स वेयर? कैश बुक. विच साइड? विड्रॉल. कैश बुक बैलेंस विल गो अप और डाउन? कैश बुक नीचे चली जाएगी. पैसा हैज गॉन डाउन, वेल इज अप, कुआं ऊपर है. व्हाट टू डू चिल्ड्रन? प्लस. इन द प्लस आइटम कॉलम वील मार्क 2630. सी ट्रांजैक्शन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन. फॉर एक्सप्लेनिंग दिस मैं कुछ चार्ट ड्रॉ करता हूं. This horizontal line represents that at a given point of time, your cash book and passbook balance happens to be same. Transaction says check deposited with bank on 30th December is rupees 12,870. These much amount of checks you have deposited into bank. So children, when the check gets deposited into bank, it appears in cash book or passbook. Definitely true. Which side? As a result, balance would increase. So your cash book will be increasing by what amount? 12,870. But question says out of which 7,850 have been realized and credited by bank. इसका मतलब ये पैसा बैंक आपके लिए ले आया है. So bank has maintained the record of how much only? 7,850. So there is a mismatch, or both the books are correctly updated? There is a mismatch. And what is the magnitude of mismatch, children? कैसे पता लगेगा? 5,020. 7,850 we'll subtract. It's simple as that. Your parents gave 100 rupees to you.
You spent 70. How much is left? Very good. 100 रुपी मम्मी ने दिया. You didn't spend 30. How much did you spend? इतना समझ में आ गया? पापा ने 100 रुपीज दिए. You did not spend 30 rupees. I repeat, you did not spend 30 rupees. How much is left with you? How much is left with you? 100. ये 100 वो गधे बोल रहे हैं जिनको इंग्लिश ही नहीं आती है. इंग्लिश की स्पेलिंग में आई के ऊपर जो डॉट होता है उतनी भी भाषा का ज्ञान नहीं गधों को. 100 रुपीज पापा मम्मी ने दिए, 30 आपने खर्च नहीं किए, तो कितने बचे आपके पास? 30 रुपी. सिंपल एज दैट. खैर, अनपढ़ों की पहचान ऐसे ही होती है. सो आउट ऑफ 12,870 बैंक 7850 ले आया है. हाउ मच इज अनडन? 0. इट्स 2 अगेन 0. Cause of mismatch is 5020. So your cash book went up by 12,870. Passbook went up by 7,850. कितना mismatch है? 5,020. Got it clear? Cash book is still up. Source book cash book है. What to do? Minus. समझ में आ गई बात? 5020 will be shown in the minus item column. Never address it like this. सर कैश बुक माइनस कर दीजिए, सर पासबुक में प्लस. कैश बुक एंड पासबुक में आप कुछ नहीं करेंगे. Whatsoever you have to show, you will be showing in the plus and minus item of BRS. Understood this much? कभी कभी क्वेश्चन परेशान भी करेगा. You will get the text. Check deposited with the bank 12,870, out of which 7,850 have not been realized. 12,870 के चेक्स आपने बैंक में डिपॉजिट तो किए, बट 7,850 का पैसा बैंक नहीं लाया. नाउ व्हाट इज द कॉज ऑफ मिसमैच? तब 7,850 होगा. इसीलिए पूछा था. पेरेंट्स गेव 100 रुपीज, यू स्पेंड 30. हाउ मच इज लेफ्ट? 70. Parents gave 100 rupees, you spent 70. How much is left? 30. Parents gave 100 rupees, you didn't spend 30 rupees. Got it clear? Parents gave how much? 100. कम्युनिकेशन का थोड़ा सा प्रॉब्लम है लोगों के साथ. कम्युनिकेशन एक चैप्टर है क्लास 12 में डायरेक्टिंग में. प्री अजम्पशंस कुछ बेवकूफ अपने मन में बना लेते हैं. समझ में आ गया? इसीलिए आंसर गलत हो जाता है. तो ऐसे ही कुछ प्री अजम्पशन से लोगों को लगा 9th 10th इजीली पास कर गए दहेज में, खैरात में, 11th भी ऐसे ही पास हो जाएगा. बट ये बच्चों हींग, कच्चे चने, व्हाट इट क्लियर, रबर बुलेट्स नहीं है, ये स्टील बुलेट्स हैं. ये बड़ा टफ है. जो पढ़ेगा वही 11th में जाएगा, और नहीं तो 11th में पढ़ता रहेगा पढ़ता रहेगा पढ़ता रहेगा. अपनी अगली जनरेशन को बोलेगा, उनके बच्चे हाथ में लिखवा देंगे मेरे पापा डबल 11th हैं, 2 बाय 11 पास किए थे. चलिए भाई. सो माइनस में 5020 लिख लिया. चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक. दिसंबर के महीने में आपने चेक बैंक में भेज दिए, बट बैंक पीपल ब्रॉट दिस मनी इन जनवरी. विच बुक डज द ट्रांजैक्शन ऑलरेडी अपीयर्स इन? कैश बुक. बट क्या जनवरी में, सॉरी दिसंबर में वो पासबुक में है? साफ साफ लिखा है कि बैंक वाले जनवरी में लेके आए. विच बुक इट डजंट अपीयर? Cash book it is appearing on which side if it is deposit? Deposit side. Balance would go up. Passbook is down, cash book is up. पैसा ऊपर कुआं नीचे. What to do? Cash book minus? Minus will be in bank reconciliation statement or will be shown as a minus item in bank reconciliation statement. And the last, children, and the last. 15 rupee is the amount. I repeat, 15 rupee is the amount that bank has debited. बैंक की डिक्शनरी में पासबुक के रेफरेंस में डेबिट इंडिकेट्स व्हाट? विड्रॉल और डिपॉजिट? एक हफ्ते ये पढ़ा है आपको. Which book does the transaction appears in? Passbook. Which side? Withdrawal. Passbook balance will go. Passbook नीचे, cash book ऊपर. पैसा is up, कुआं is down. What to do? Will be shown as a minus item. Okay, children. So finally, you will get the answer 8960 plus 2630 minus 5020, 8660 and 15. Children, it's minus 2105. I repeat, it is minus 2105. So minus item is exceeding over the plus item.
Do tell me the values again, please. It's 8, 9. Then in plus column, how much? 4, Then 6. in the minus column, how much? 5, 0, 2, 0. Then 1, 5, 15. मैंने आपको एक बैलेंसिंग की टेक्निक क्लास में सिखाई थी. आज मैं आपको दूसरी टेक्निक सिखा रहा हूँ. इससे थोड़ा टाइम बचता है. Debit is children 8 plus 2, 11, 900. 12, 5, 30 if I'm not wrong. 8960 plus 2630. 11, 590, sorry. Need not to show it anywhere inside the format of BRS. 5020 plus 8660 plus 15. It is 13,695. Which side is excess? So children, your answer would be titled not as balance. Rather, it would be titled as, if positive value exceeds, we'll write the answer as balance. If negative value exceeds, we'll write the answer as overdraft. We started as per which book, children? So definitely the destination would be, तो पापा स्टाइल आप नहीं कर रहे हैं, आप स्टूडेंट स्टाइल कर रहे हैं. कैश बुक का बैलेंस पता है, कॉज ऑफ डिफरेंस पता है, आपसे पासबुक का आंसर पूछा जाता है. बट बिजनेसमैन के पास तो कैश बुक पासबुक दोनों है, उसका आंसर ये होता है चिल्ड्रन. ओके, सो चिल्ड्रन 2105 will be written in this column and then we'll show the totals. The best part of this type of balancing is this, that you need not to write the total 2 times, children. But last approach में people remember we used to write the total twice. पहले जो भी actual आता था वो लिखते थे, फिर difference और फिर total करते थे. तो यहाँ पे it's a time saving device. You can do it in any way as you feel like. Anyway children, anyway as instructed by the teacher in school. कैसे भी कर सकते हो. Quickly चलिए. Proceeding further to question number 3A. H.A.S.T.E.R. is the businessman and cash book shows a debit balance of 8630. Debit balance means favorable or unfavorable as per cash book? Favorable. So it's a plus item. Let's analyze the transaction one by one. It said check issued to G Gupta and A Apte, but this is not presented for payment. Which book does it appear in, children? Cash book. Deposit or withdrawal? Cash book balance will go down. Passbook is up. पैसा has gone down. कुआं is up. क्या करना है? What to do? Plus or minus? Plus. कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे से डैश लगा लेते हैं. जब होमवर्क चेक होगा, जहां प्लस होगा ऐसे प्लस मार देंगे. Next. Payment of 920 to B Bhaval made directly by to the bank by credit transfer. Somebody has already transferred money in our account. और हमें कानों कान, मुंह मुंह, आंखों आंख, नाकों नाक खबर नहीं मिली. This transaction appears where already? Side. Passbook balance will go. Cash book is down. पैसा is down. कुआं is up. What to do? Plus. सर ये दोनों सेम कैसे हो गया? अरे एक बार कैश बुक गिर गई थी तब भी स्टेटस यही था, दूसरी बार पासबुक बढ़ गई तब भी स्टेटस यही है. पेमेंट ऑफ 530 बैंक ने हमारे बिहाफ पे पेमेंट कर दिया, बट वी डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट दिस. व्हिच बुक डज द ट्रांजैक्शन अपीयर्स इन? साइड. विड्रॉल. पासबुक बैलेंस पे क्या इफेक्ट आएगा? इट विल गो डाउन. कुआं इज डाउन, पैसा इज अप. व्हाट टू डू? पैसा कुएं के पास जाता है. माइनस. बैंक हैज चार्ज्ड मनी. Is it mentioned that it is written in which book and not written in which book? तो यहाँ पे हमारा एक BRS का standard pre-assumption चलता है. Any transaction done by the businessman will primarily be assumed to appear in cash book bank column, not in passbook. Any transaction effected by the banker will primarily be assumed to be done in passbook and not in cash book. तो ये कुछ pre-assumptions हैं. So children, this transaction appears to be where? It's a bank charge. Deposit or withdrawal? Passbook balance will go. Cash book is up. What to do? Minus. Cash book minus. BRS में minus. Cash book में you cannot do anything. It is already made. जैसे मैं आपको नहीं बदल सकता, आपका एटीट्यूड ही आपको बदलेगा बस. तो आप कैश बुक और आप ही पासबुक है. मैं BRS हूं. मैं बस ये बता रहा हूं where you are good and where you are not good. समझ में आया कि नहीं आया?
तो टीचर भी बच्चे का जब क्लासिफिकेशन करता है तो वो बीआरएस बनाता है एक तरह से, कितना आपको अपग्रेड किया जा सकता है, कितना आप अपग्रेडेड है, कितना आप डाउनग्रेडेड है। नो ह्यूमन बीइंग कैन चेंज, नो ह्यूमन बीइंग ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। जो गधा है वो अपने कर्मों की वजह से, जो घोड़ा अपने कर्मों की वजह से। A bank deposit 3640 somebody, sorry, we deposited into bank, but बैंक वालों ने इसको रिकॉर्ड नहीं किया। Which book does it appear in? Side. डेबिट क्रेडिट मत बोला करिए, नहीं समझ में आता। डिपॉजिट विड्रॉल से चलिए। डिपॉजिट, कैश बुक बैलेंस विल गो, कैश बुक ऊपर, पासबुक नीचे। व्हाट टू डू? माइनस। गॉट इट? समझ में आ गया? बैंक डिपॉजिट लिखा है ना, तो बैंक में आपने जब डिपॉजिट किया तो आपकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो बैंक कॉलम डेबिट साइड में वैल्यू कॉन्स्टिट्यूट करेगा, बैलेंस विल गो अप। जब आप इसका होमवर्क करेंगे, ऐसे से करते रहेंगे, घर वालों का भूत आ गया है। चलिए, क्विकली अपडेटेड इन द फॉर्मेट चिल्ड्रन, क्विकली।